From the diary of Anne Frank, we are going through the chapter in the summarized way. We will know very well. Now, Anne Frank writes her diary. Anne Frank writes her diary in daily routine. And here is some from डायरी. डायरी में उन्होंने क्या लिखा यहाँ पर यही बताया गया है और उनसे क्या सीखने को मिलता है. She feels that doing so is a strange experience for one like her. It is so because she has not written anything earlier. Secondly, no one would be interested in reading something written by her as she is a small girl. वो कभी ऐसा सोचे भी नहीं थे. उनका लिखा हुआ डायरी कभी न कभी आगे किसी के द्वारा पढ़ा भी जाएगा. One day Anne felt a bit depressed. She felt that people had more patience than people. Paper had more patience than people. She was wondering whether to stay in or go out. Finally, she stayed in and thought she felt that she won't let anyone read her diary unless she found a real friend. So he wrote it. Yes, आपका कोई भी चीज जो रिटर्न फॉर्म में है, it will be helpful for you when you make it as a friend. यदि आप उससे एज ए फ्रेंड रियल फ्रेंड में करते हो तो आपका लिखा हुआ चीज आपके सामने जो कोई चीज है वो आपका हेल्पफुल हो जाता है और आपके काम आ जाते हैं. नो, शी रोट दैट शी वाज नॉट कंप्लीटली अलोन इन द वर्ल्ड. ऐसा वो कह रही है, वो अपने आप को अलोन नहीं है वर्ल्ड में. बट शी हैड लविंग पेरेंट्स एंड अ 16-year old sister. She had about 30 people around her. She could call friends. Then she had a family, aunts, and a good home. But she had no true friend. She thought of having a good time when she was with friends, but she could not get closer. She admitted it her fault that she didn't confide in each other since they were not able to change. She started writing a diary. She made it her friend. इतने होने के बावजूद भी वो एक दोस्त बनाना चाहती थी और वो दोस्त उनका फ्रेंड जो था वो डायरी जिसमें अपनी सारी बातों को लिखना चाहते हैं. आपके मन में कभी तकलीफ होती है, देन यू शेयर विथ योर फ्रेंड्स. आप अपने फ्रेंड के साथ शेयर करते हो. यहाँ पर वो अपनी बातें सारी बातें उन्होंने अपनी डायरी में राइट करते गई. शी वांटेड द डायरी टू बी हर फ्रेंड, सो शी नेम्ड इट एज हर फ्रेंड किटी. डायरी में अपनी बातों को लिखना चाहती हैं, डायरी को सब बातें बताती हैं और डायरी को अपना फ्रेंड मानती है. देन उनका एक नेम दिया गया, फ्रेंड किट्टी. शी रोट अ ब्रीफ स्केच ऑफ हर लाइफ. और उस डायरी में अपने लाइफ के बारे में शॉर्ट में राइट की. द she disliked doing so, so she wrote it. She wrote that her father married her 25 years old mother at the age of 36. Her sister Margot was it is born, not born, born in Frankfurt in Germany in 1926. She was born on 12th June 1929. Her father immigrated to Holland in 1933. It is very clear. You have to go through the point to point. Margot, her sister, born date of birth is given. Now her father immigrated to Holland. Now her mother Edith Hollander Frank went with her father to Holland. उसके साथ ही शादी के बाद वह उनके मम्मी उनके पापा के साथ हॉलैंड आ गए. But she and her sister were sent to Aachen to stay with their grandmother. वहीं पर छोड़ दिया गया ग्रैंडमदर के साथ. Then they went to Holland. और वे लोग हॉलैंड चले गए. Now, there she was sent to a Montessori nursery school. वहां पर उनको नर्सरी स्कूल में एडमिट किया गया. She stayed there until she was 6. 6 साल तक वहां रही, कंटिन्यू स्टडी की. In the 6th class, her teacher was Mr. Cooperus. The headmistress both.
had tears when they bid farewell. In the summer of 1941, her grandma fell ill. अब 1941 में उनकी दादी बीमार पड़ गई. She had to be operated upon. अब उसे ऑपरेट भी करना पड़ेगा, उन्होंने देख रेख करना पड़ेगा. She died in January 1942. अब उनकी दादी मर गई. Now, she thought of her greatly and she loved her still. They celebrated Anne's birthday in 1942. The four of them were doing well till 20th June 1942. Then Anne wrote her diary again. It was like this. Yes, till 20 June 1942. It was the day of the declaration of results. Everyone in her class was in tension. The reason was who would go to the next class and who would not. कौन अगली क्लास में प्रमोट होंगे और कौन नहीं होंगे, कौन सा नहीं होंगे. They had bets. उनके अब बेट लग गए. With other boys on who would pass and who would not. कौन पास करेंगे, कौन नहीं पास करेंगे, उस पर उनके बेट लग गई. Now she found the teachers as the most unpredictable creatures on the earth. She was not worried about her girlfriends and herself. She was sure to make that, but she was not sure about maths. They could wait and told each other not to lose her. No, she went along her teachers pretty well. Mr. Cashin was a dull person who taught them maths. Yes, it is very clear. Maths teacher was Mr. Cashin. He was always annoyed with her as she talked much. उससे बात बहुत किया करते थे, बहुत बातें करते थे. He gave her as punishment extra homework. इसलिए उन्हें बहुत ज्यादा होमवर्क मिलता था. It was in the form of an essay on a chatterbox. She was unable to understand what she could write about it. She put a slip of it on her school bag. It was to remind herself to write later. वो भूल जाया करती थी किस टॉपिक पे लिखना है, इसलिए उन्होंने अपने एक स्लिप पर राइट करके टॉपिक राइट करके वो अपने बैग में रख दी. सो बाद में उसे राइट कर सकते हैं. In the evening, she had done her homework. She began thinking of the subject of the essay. She thought to write good points of arguing to prove the necessity of talking. Yes, वो point to point कर रही है कि बात करना क्यों अच्छे है, क्या नहीं अच्छे है. Then she had an idea. She then wrote the three phases to her satisfaction. She wrote that talking was a feature of a student. उनको यदि टॉकिंग करने से ये बोला जा रहा है वो बहुत टॉक करते हैं, अब ये सोचने लगे कि टॉकिंग करना क्यों जरूरी नहीं है. अब उस बातों को लेकर के उसकी टॉकिंग की एक फीचर को लेकर के एक स्टूडेंट की टॉकिंग को लेकर के उन्होंने राइट की. हर मदर ऑल्सो यूज टू टॉक मच. सी इनहेरिटेड दिस ट्रेट फ्रॉम हर मदर दैट सी ट्राइड टू कीप क्वाइट. अब यह कोशिश करने लगी कि यदि मैं कोशिश करूं कि चुप रहने का तो इट मे बी पॉसिबल. मिस्टर किशिंग रीड इट एंड लाफ्स. बहुत हंसे जब टीचर आए और देखे उनको. देन ये 3 पेजेस का जो राइट की थी, देन उन्हें देख रीड करके टीचर बहुत हंसे. देन ही गेव हम अनदर essay as she didn't stop talking. She was to write it on an incorrigible chatterbox. She wrote it and it satisfied Mr. Kishing. She didn't talk for 2 lessons, but she started speaking again in the third lesson. Yes, he again asked her to write an essay. It was quack, 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 said Mr. Chatterbox. The class too roared into laughter hearing it. जैसे ही सुना बहुत शोरगुल होने लगा. She also laughed. She wanted to write something original now. Her friend Sane was good at poetry. Poetry में सने जो थी उनकी फ्रेंड जो थी उनका पोएट्री बहुत अच्छा हुआ करता था. She helped her to write an essay in verse. अब वर्स मोड में उन्होंने राइट करने के लिए हेल्प किया. Anne had finished her poem.
It was about a mother duck and a father swan. You know, duck and swan with three baby ducklings. The three ducklings were bitten to death by the father. It was because they quacked too much. Luckily, Mr. Kissing took the joke the right way. Mr. Kissing had played a joke on her. यहाँ बता के जैसी पोएम उन्होंने फिनिश किया, पोएम में ये था उनकी जो मदर डक थी और उनके फादर जो स्वान था और उनके बच्चे थे, इस बेस पर उन्होंने पोएम तैयार की थी। अब यहाँ पर इन लोग को हंसी आ गई और एक जोक उन्होंने मिस्टर किसिंग ने प्ले किया, बट सी हैड it on him. He read the poem to the class, adding his own comments. Since then, she had been allowed to talk. She hadn't even been given extra homework. अब उसे एक्स्ट्रा होमवर्क नहीं दिया जाने लगा। मिस्टर किसिंग कंटिन्यूड मेकिंग जोक्स इन द क्लास और इस तरह से मिस्टर किसिंग जो टीचर थे वो बाबा इस तरह से जोक्स भी वहां उठाया करते थे, लेकिन दोबारा अब उनको एक्स्ट्रा होमवर्क नहीं दिया क्योंकि एक्स्ट्रा होमवर्क देने पर उधर से जो रिप्लाई आता था वो कहीं ना कहीं और मस्ती मजाक वाली हो जाती थी। और एनी फ्रैंक ने अपने उनका जो अपना फ्रेंड बना वो उनका फ्रेंड डैडी बना, जो डैडी में अपनी सारी बातें लिखा करते थे, मन की सब बातें लिखा करती थी। थैंक यू सो मच।